It's very interesting to work with the younger generation, with the upcoming youth of your country. हम ये बोलते हैं कि बच्चा बाहर क्यों पढ़ने जा रहा है, क्योंकि शायद वो प्रोफेसर पढ़ा रहा है जिसकी हम इंडिया में बुक पढ़ते हैं, Right. और वहाँ पे वो प्रोफेसर is actually teaching you life. I remember once a teacher, when the AI was introduced in the schools, that teacher calls me up. Sapna, tell me one thing. AI बच्चों को कैसे बताओगे? 6th या 7th के बच्चों को कैसे इंट्रोड्यूस करोगे? मुझे समझ नहीं आ रहा. फर्स्टली मैम थैंक यू टाइम निकालने के लिए. हम आई नो मतलब आज का सेशन भी जब सोचा था उस टाइम प्लान करा था उस टाइम शुरू नहीं हुआ, और वैसे भी हमने आपका बहुत दिमाग खाया पिछले कुछ दिन में सेशन लेने के लिए. तो फर्स्टली थैंक यू. और कुछ दिन पहले जब प्रणव और मैं आपस में डिस्कस कर रहे थे कि हमें सपना मैम से बात करनी है, तो वी वर सॉर्ट ऑफ ट्राइंग टू मेजर कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट अपॉर्चुनिटी वी हैव इन आवर हैंड्स. तो हम आपस में डिस्कस कर रहे थे कि we are talking to someone who's been in the education space for a good 27 years now. In fact, I'm probably underrating the number of years you've been here. और उसमें भी you've been teaching people in grade 11 and grade 12, which is kind of the most notorious lot to sort of pickle your hands with. तो thank you इसके लिए. And like जब आपने शुरू किया होगा like 95, right? तो तब तो I think ना YouTube होता था, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, व्हाट्सएप नहीं था, कम्युनिकेशन कितनी मुश्किल थी, राइट? एंड स्कूल वाज द नॉर्म. तो व्हाट गिव अस सम इनसाइट कि तब क्या स्फीयर होता था, क्या एटमॉस्फेयर होता था? I think तब students used to be dependent on seniors' notes, the content of the book, और जो टीचर्स ने क्लास में दे दिया. उसके अलावा एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ अवेलेबल नहीं था. इधर उधर से 2-3 रेफरेंस बुक्स, that's it. So that was not sufficient if you compare to today's generation. और रेफरेंस बुक्स, लाइक हाउ डिड यू पिक योर रेफरेंस बुक्स, लाइक व्हाट वाज द क्राइटेरिया? क्योंकि अब तो लाइक देयर इज अ प्लेथोरा ऑफ रेफरेंस बुक्स. Yes. तब तो लाइक रेफरेंस बुक भी 2 होती होंगी मे बी, आई डोंट नो. रेफरेंस बुक्स क्या होती थी? जो बैक एक्सरसाइजेज हैं उनको इकट्ठा करके एक्यूमुलेट करके एक जगह डाल दिया, 2-3 सीबीएसई के 10 years पेपर्स डाल दिए, सो रेफरेंस बुक हो गई. बेसिकली क्वेश्चन बैंक है. क्वेश्चन बैंक, राइट. There was no extra stuff to to children could be exposed to. Not much. मैम तो बेसिकली अगर हम 95 को थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करें तो 95 इज़ ऑल्सो वेरी क्रिटिकल ईयर. कि अगर एक बार सेंस लेने की कोशिश करें कि वहाँ पे क्या हो रहा था उस टाइम, टाइम स्पेस क्या था आपका. तो अब देखो 95 में खान अकेडमी विच इज़ काइंड ऑफ अ गुड नॉर्म टुडे वाज 9 years away. YouTube was 9 years away. एंड इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन 95 में इंडिया की पहली फ़ोन कॉल भी हुई थी. तो उस टाइम पे एग्जैक्टली अगर आप एक क्लास को पिक्चर करो तो कैसी दिखती थी वो? मतलब बच्चे कैसे होते थे, क्या कर रहे होते थे वो? बच्चे एज यूजुअल मिक्स्ड होते थे क्लास में. कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखते थे, कुछ जो टीचर ने दे दिया उतना करते थे, और कुछ थोड़े लेड बैक एटीट्यूड वाले भी थे. बट मेनली यही था कि अगर हमें कुछ करना है तो एक कोई जो भी एंट्रेंस एग्जाम्स की कोई बुक है या कुछ वैसी चीज़ें हैं वो कर लो, वो यूज़ कर लो, वो रेफ़र कर लो. और कुछ बहुत पुरानी स्टैंडर्ड बुक्स होती थी हमारे टाइम में. जैसे आप कह सकते हो कि मैग्रॉ हिल पब्लिकेशंस की बुक आ रही हैं, और या कि एसपी गुप्ता आ रही है स्टैट्स की. तो दोज वर काइंड ऑफ बाइबल्स. एवरी चाइल्ड यूज्ड टू रेफर एंड सोचता था कि बस हो गया हमारा. सो मेरे को जो रफ सेंस मिल रही है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट ऐसा दिख रहा है कि देयर इज अ कोहॉर्ट ऑफ स्टूडेंट्स राइट इन फ्रंट ऑफ यू हु आरंट एज टेक एनेबल्ड एज पीपल ऑफ टुडे आर. तो लार्जली दे आर रिलाइंग ऑन यू एंड अ फ्यू अदर बाइबल्स एज यू सजेस्ट. ट्रू. राइट. तो ऐसे में आपने ये नोटिस किया है कि अगर ऐसा हो रहा था उस टाइम कि आर स्टूडेंट्स मोर ओबीडियंट व्हेन दे हैव अ क्लियर आइडिया कि जो मेरे को सीखना है वो टीचर से ही सीखना है, एज कम्पेयर टू टुडे जहाँ उनके पास 100 सोर्सेज हैं. वेरी ट्रू. तो टीचर्स, जो एक टीचिंग का माना जाता था 30 साल पहले कि टीचर्स हमारे गुरु हैं, राइट. सो देयर इज अ सर्टेन ग्रेडियंट. टीचर्स को हम एक पेडेस्टल पर रखती थी सोसाइटी. वो आप अपने जो 27 साल है उसमें कैसे कंपेयर करते हो आज के स्टैंडर्ड्स को जिस तरह हम टीचर्स को देखते हैं और पहले? टीचर्स की रिस्पेक्ट अभी भी कम नहीं हुई है unless they are ready to explore the world along with you. Right. But then those who are continuing with the last 20 years note same thing. तो I don't think उनकी क्लास में वैसा वाला एटमॉस्फेयर है जो पहले वाला होता था.
वो अटेंशन नहीं है, वो अटेंशन, वो स्पैन नहीं है बच्चों का, कंसंट्रेशन स्पैन उतना, और वो हमेशा बहुत डिमांडिंग और कुछ नया चाहते हैं टीचर से, राइट, कुछ एक्स्ट्रा चाहते हैं। जैसे अभी आपने बताया था, फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग कि तब भी देयर वर कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स, राइट, जो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं. यस. What was your basically what were the things that you used बच्चों को मोटिवेट करने के लिए? क्योंकि अभी तो we have a variety. हमें पता है कि अगर हमें बच्चों को somebody is not interested in something, तो maybe we have more ways and means हम उसको capture कर सकते हैं उसका interest. But तब जब हैं ही दो books which are already not the best out there, या maybe not most interesting for every kid who's Correct. not willing to study that much, तो उस सिचुएशन में आप कैसे करते थे? मैं दो सिचुएशंस आपको बताती हूँ, तो आई थिंक आप उसमें अच्छे से रिलेट कर पाओगे. एक सिचुएशन जब मैंने MCA फाइनल ईयर आई टॉट, स्टूडेंट्स आई टॉट, तो देयर यूज्ड टू बी अ पेपर फॉर व्हिच देयर वाज नो बुक अवेलेबल. So then definitely it was my first teaching year and it used to be a very challenging paper, but it was given to me as a fresher. I used to sit with my dean separately, with my HOD separately, department people, and then I used to learn from their wisdom, their knowledge, because शायद वो ये paper मुझसे पहले पढ़ाते थे और immediately मुझे दे दिया गया वो paper. तो मैं उनसे पूछती थी कि आप कहाँ से पढ़ाते हो, ये कैसे करते हो. Then we used to refer to the articles published in different magazines. And then when I used to quote it, children used to find it कि ये matter हमें कहीं नहीं मिलेगा, तो मैम जो word बोल रही हैं, every word they used to write down and note down कि हाँ, this is our ultimate resource. Right. Second situation, I can say that was my first year in St. Francis. So there when I started teaching, children were different, and like a fresher, you are always on a very situation where they judge you, where they always want to know how much are you capable and all that. So I used to always begin my lesson with where this technique is applicable, how would it help you in future. So then I used to relate it with everyday life's examples, and then they used to be after 10, 12, 15 minutes of my class, then they were in the right mode to teach. So then I used to start teaching. Right. So this is how I captured the attention of the students, I think. So I feel there is immense pressure कि जो भी आप word बोल रहे हो, that is literally पत्थर की लकीर for the students, right? So there must have been insane amount of pressure. But I would love to explore कि आपने बोला कि before school you were already teaching. MCA पढ़ाते थे, Master of Computer Applications पढ़ाते थे. My first year I taught BSc Computers Honors, final year students. Amazing. I taught the statistical methods वाला paper, and then MCA this one. ये कौन सा साल है? Which year This is is this? 92. 92. तो थोड़ा और पीछे चलते हैं, if that's fine, कि मतलब you've seen India when you, obviously when you came, you've seen India in the early 70s as well. Yeah. Although slightly vaguely, but you've seen India in the early 70s. Exactly. And that wasn't in a tier 1 city, which is different from the experience you've had in teaching. मतलब आप दिल्ली में पढ़ा रहे हो पिछले 30 साल से, but उसके पहले your initial schooling has happened in Karnal. Yeah. Right. So what was growing up in that time and place? मतलब उस टाइम दिमाग में क्या चल रहा होता था, वहाँ पे क्या वाइब थी? I would love to know कि आप basically schools कैसे choose करते थे? Options होती थी, and how did you pick a school? या मे बी सारे बच्चे एक ही स्कूल में जाते थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था. करनाल इज अ वेरी अपकमिंग सिटी ऑफ हरियाणा, तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर एजुकेशन ओरिएंटेड. तो वहाँ पे जो हमने स्कूल किया, तो उस टाइम में पब्लिक स्कूल स्टार्ट हुए थे, आप बोल सकते हैं पब्लिक स्कूल. सो ours was a public school. Mrs. Vora used to be our principal, and then she used to be like very motivating and encouraging for children. So I remember she used to give us a chance कि ये planetarium में ये कुछ हो रहा है, and then I, being the head girl, you will be doing the entire anchoring of the event over there, which is happening next. So then she used to encourage us a lot. और अगर हमने 2 दिन छुट्टी कर ली, third day she used to be at my home before coming to school. What happened to Sapna? Why didn't she come? प्रिंसिपल आपके घर आ रही है. That kind of atmosphere हम we तो ये enjoyed. imagine ही नहीं कर सकते. Yes, yes. मतलब It was 1-to-1, and it was my duty to pick up the headlines and announce in the assembly, speak it in the assembly. Right. 5 headlines every day. So sometimes मैं नहीं कर पाती थी,
भागते भागते कुछ होमवर्क करते हुए, कुछ आप करते हुए रेडी होके स्कूल गए हो. एंड देन आई यूज्ड टू हैव अ वेरी स्वीट हिंदी टीचर हु यूज्ड टू बी, नहीं हुआ आज, मेरे पास है, मैं देती हूँ, ये वाला बोल देना असेंबली के जस्ट पहले. So I think we are very lucky and we are very privileged people to had such beautiful teachers जिन्होंने इतना हमें सपोर्ट किया और इतना इनकरेज किया करने के लिए कुछ भी. आपने काफ़ी, तो आपने जो बताया ऐसा लग रहा है काफ़ी अच्छी टेल है, बट अगर मैं अभी जाना चाहूँ वापस मिड 70s में, तो मेरे को तो लगता है मैं तो नहीं जाऊँगा. इमरजेंसी है, Tier 2 सिटी है, मतलब जिस ईज से आप बता रहे हो, तो आई एम श्योर देयर मस्ट हैव बीन सम प्रॉब्लम्स आल्सो, राइट? मतलब we've gone 20 years back from essentially when you started teaching. तो क्या ऐसा भी था कि आपकी फैमिली में कोई आपको पुश कर रहा था टू स्टडी, या आपकी फैमिली में थोड़ा ऐसा माहौल था कि यार हाँ? Definitely. All of us brothers and sisters, we are all professionally qualified, and my mom dad, they are the force behind us कि नहीं आपको करना है और कुछ अच्छे से बनना है लाइफ में. And you were the head girl too. I was head girl, yes. So मतलब थोड़ी सी ये एस्पिरेशन क्या थी हमेशा से कि I'm destined for better things than where I am. Yeah, I'm stuck in a city, stuck in the city. I have to outgrow this. I have to go out. ऐसा कुछ कभी लगा आपको? ऐसा हमेशा से था क्योंकि हम दिल्ली वाले लोगों को बहुत ऊंचा करके देखते थे. Right. कि हाँ ये लोग कुछ हैं जिनके शायद कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे थे और हम लोग थोड़े सिंपल लोग थे शायद. जब आप अपनी असेंबली कह रहे हो, इसमें मीडियम इंस्ट्रक्शन क्या होती थी? आप इंग्लिश में बोलते थे आपको कि बोलो, आप हिंदी में बोलते थे? हेड गर्ल हेड बॉय के लिए कंपलसरी था रोज वाइट यूनिफॉर्म पहनना और इंग्लिश में बोलना, और इंग्लिश में असेंबली में बोलना. वैसे हमारा इंग्लिश मीडियम बोलते थे, बट इट इज नॉट लाइक टुडेज कॉन्वेंट वेयर यू कैन नॉट अटर अ वर्ड ऑफ हिंदी. फाइन नहीं लगता, वैसे वाला नहीं था, फाइन नहीं लगता था. ट्रू. तो जब आप लेट्स से जब आप वहाँ से हरियाणा से इवेंचुअली यू स्टार्टेड टू डिसाइड कि मुझे कॉलेज जाना है, तो आपने क्या डिसाइड किया कि मुझे वाज इट अ प्रायोरिटी कि मेरे को हरियाणा से निकलना ही है? मतलब एग्जैक्टली क्या सोचा आपने एट अराउंड अबाउट 18? In our days, 11 and 12 used to be in the college. Okay. So lecturers used to teach 11 and 12 in the college. Okay. So that was pre-degree course. Right. तो 10+2 स्कूल में नहीं होता था. 10+2. तो 10th के बाद in Kushetra University, Right. ours was the first batch which started with computers. And you were only 17 back then, 16 or 17. हाँ. Right. तो फिर हमें लगा कि कुछ नया कोर्स आया, हमें वही करना है. अभी आपने बोला कंप्यूटर्स, तो कंप्यूटर्स इन आई एम गेसिंग लेट 80s अर्ली 90 के आसपास. तो 90, अगर अगर मैं कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में ग्राउंड कर दूं, 90 इज 1 year बिफोर इंडियाज इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन. तो कंट्री में कंप्यूटर्स ही नहीं थे ढंग से. उस टाइम ये सोचना कि कंप्यूटर्स करना है, ये कहाँ से आ रहा था एग्जैक्टली थॉट? हमारे तो आसपास कंप्यूटर्स हैं, आपके घर में? And especially being a girl in a Tier 2 city, what motivated you? My parents. They are the guiding force behind all this. So my dad used to be the distributor in the northern India. He used to supply to all labs, all testing chemicals and kits in the hospitals also. Right. So I think he used to be in touch with the chemistry HOD, physics HOD. इक्विपमेंट्स भी जाएंगे, किट्स भी जाएंगी, केमिकल्स भी जाएंगे. तो शायद उनको कहीं पता था कि कंप्यूटर्स अपकमिंग चीज़ है तो आपको करना चाहिए. तो ही वाज बिहाइंड अस, और उन्होंने ऐसे फोर्स नहीं किया, हमें बोला कि दिस इज समथिंग न्यू, यू शुड ट्राई. तो जब मैंने किया तो शायद मैंने अच्छा किया, तो फिर मुझे भी कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मे बी दिस इज द फील्ड फॉर मी. मैम जैसे आजकल मतलब कोई बच्चे करते हैं, मतलब मैंने देखा इंडिया में एक एक्सट्रीम ट्यूशन कल्चर है कि कोई भी चीज़ पढ़नी है तो कोई और पढ़ा दे हमें. अब जो सिचुएशन आप डिस्क्राइब कर रहे हो उससे मुझे लग रहा है इवन दो योर फादर न्यू कंप्यूटर साइंस वाज बूमिंग, आई एम श्योर ही कुडंट सिट विद यू टू टेल ऑल ऑफ कंप्यूटर साइंस. नॉट एट ऑल, ही डिडंट नो अ बिट. बट हमारे टाइम में ट्यूशंस वो बच्चे जाते थे जो पास नहीं हो पाते थे. राइट. मतलब ट्यूशन एज अ फॉर्मेट तब भी एग्जिस्ट करता था. ट्यूशन बहुत एक ऐसे वाला था कि लुक डाउन अपॉन कि आप ट्यूशन जाते हो, आपको आता नहीं, आप रेमेडियल क्लासेस है तो. हाँ राइट. वो वैसे वाला नहीं था कि आप अच्छा करने के लिए ट्यूशन जाते हो. राइट. वैसे वाला कुछ. तो आपको इनिशियल ईयर्स में कभी ये लगा था कि यार मैंने इंटरेस्ट से ले तो लिया है, पढ़ाया, आई डोंट नो कि हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा. हाँ मुझे लगा ग्रेजुएशन कोर्सेज में कई बार मुझे लगा जब हम प्रोग्रामिंग सीखते थे कि थियोरी तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, पर प्रोग्रामिंग के लिए, क्योंकि जब ये स्टार्टिंग था तो हर लेक्चरर 2 महीने के बाद चला जाता था छोड़ के. नेचुरली दे नेवर वांटेड टू बी इन टीचिंग.
They wanted to be in coding. Right. वो 2 महीने बाद लेक्चरर नहीं है 4 महीने के लिए. Okay. फिर नेक्स्ट सेमेस्टर आया, कोई आया, फिर वो नहीं है. तो हम बीच में अटक जाते थे कि कैसे पढ़ें, अपने आप बुक्स में से रीड करें, सीनियर से सीखें, कैसे करें. तो उसके लिए फिर हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था. राइट. लेट्स से अब एक बार उसमें आते हैं कि आप अभी आप कुरुक्षेत्र में हो, यू जस्ट डन योर +2 एज दे यूज्ड टू से इट बैक देन. अब +2 के बाद यू डिसाइडेड टू परस्यू कंप्यूटर साइंस फ्रॉम अ ग्रेजुएशन पर्सपेक्टिव. तो वो आपने कहाँ से करी? कुरुक्षेत्र से ही करी. राइट. एंड दिस वाज अराउंड अर्ली 90s अगेन, 92 93, राइट? तो अब लेट्स से आपने कंप्यूटर साइंस अभी खत्म करी है. 90s I completed my graduation. 90s is when you sort of wrapped up your graduation. Now I'm presuming that there's a little bit of pressure. I've done something truly novel. I've had a little bit of a hard time maintaining continuity कि teachers आ रहे हैं जा रहे हैं. अब मैं industry में अपने आप को कैसे induct करूँ? Like what next? कि आपने you picked a field that was new. हाँ. You studied with great difficulty. तो अब what were your career choices? Like आपको कैसे पता था कि अब मेरे को क्या करना है? अब मैंने ये सीख लिया है. What is my next step? My next step was definitely the field of computers because I've given it 3 years. Now I should do a specialization further. Okay. All right. So then it used to be entrance exam everywhere. So in our days, it used to be very few places. So there was a dilemma to do MC or the MSc. Right. Right? Because BSc you have done already 3 years. Right. And then people used to go for MSc after that. Right. MCA first year was a repetition of BSc. Okay. So then, but then I was clear I had to go in computers only in post graduation. उसमें भी आप वहीं थे या फिर आप you moved places this time around? I gave entrance exam. I had to write entrance wherever it got cleared. I did. Right. And where did that take you? It took me to Banasali University, Right. which was the real computer science I should say I have learned. Right. There the teachers were so dedicated and so into computers. So it was known for computer science because the VC was from USA. He had done his PhD from there. Right. And he was running the department. So Right. he actually knew what is to be taught. Right. And this was in which city was this in? This was in Jaipur. Jaipur. Right. So this was the first time you actually moved places in terms of a full state being uprooted. I kept on moving. Like I was born in Shimla, then schooling from Karnal, then graduation from Kurukshetra, then post-graduation from Jaipur, and then I trained and started my career in HCL Delhi. Okay. I was just wondering कि आप you picked computers because it was novel, right? Then I think this was the first time in Banasthali that you started loving the subject. Is that true? Or maybe Yes. understanding it truly? Understanding it truly. All right. तो ऐसा क्या हुआ था? Because the teachers were permanent over there. Oh, okay. Because the teachers used to stay there, teach us with full dedication. Right. They had one objective: if the person is MPhil, the next PhD the person should do. There was a kind of growth everybody was going through. So like Right. only continuity was enough to make you fall in love with the subject. No, there was a teacher who could explain Like us the one of the topics. factors. Yes, one of the factors. And then there used to be so much competition because everybody used to apply in IIT Roorkee, IIT there to get training semester from there. So if you are doing well, then only your curriculum will be, your resume will be selected over there. So for that internship, we had to apply to various places. So if you were doing well, then only you will get through. जब आपने किया और आप फाइनली पहली बार दिल्ली आए, राइट? जॉब आपको पहली बार दिल्ली में लेकर आई, उससे पहले आप कभी आए थे दिल्ली? कभी ऐसे विजिट करने के लिए. राइट. तो जब आप पहली बार आए मतलब वर्क करने के लिए दिल्ली में, तो वाज इट अ स्लाइटली कल्चर शॉक? लगा था आपको उस टाइम कि यार मैं कहाँ पे आ गई अब? Culture shock से ज़्यादा I would say people were smarter. They were very quick and this was the main difference. I think culture बहुत ज़्यादा different नहीं था. तो इम्पोस्टर सिंड्रोम थोड़ा महसूस हुआ कि यार मैं यहाँ पे कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी? हाँ कई बार फील हुआ HCL में. कई बार फील हुआ. एक था एक ड्राइविंग फोर्स था कि नहीं करना है. But I'm still interested कि from Banasthali, right? How did you end up in HCL Delhi? Right. Like what made that happen? And how did you know कि अभी HCL is also an avenue for me? Right. We were 28 girls
Many of us landed in IIT Roorkee. So in your entire batch. Entire batch, and Okay. most of them are abroad nowadays. Only few have settled in teaching, like 2 or 3. And another very important thing that कि एक तो हरियाणा करनाल, right? Computers. So what was the gender ratio? Like, did it not ever make you think कि ऐसा क्यों है? Were you alone या हमेशा से you did find some girls around you? या 28 girls sounds like a big number to me even in today's colleges in one class. So like, what was like that? What was In that my like? graduation, the ratio was 18 boys and 4 girls. And like we got quite used to it because हमें लगता था हम कुछ अलग और कुछ बहुत अच्छा सीखते हैं, तो वो हमें बॉदर नहीं किया, बल्कि हम बहुत शायद बॉयज स्मार्ट थे और हम बहुत लेबोरियस और कंसिस्टेंट थे, तो कई बार बॉयज को हमसे कुछ पूछना पड़ जाता था, तो दैट यूज्ड टू बी वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस, और शायद हम उनसे स्कोर भी बेटर कर लेते थे, तो दे यूज्ड टू कॉल मी, तुम तो चैम्प हो, तुम्हारे नंबर तो ज़्यादा ही आएंगे. राइट. एचसीएल में भी काम कर रहे हो और आपने फाइनली द रियल एलिफेंट इन द रूम इज कि आपने हाउ डिड टीचिंग हैपन, मतलब यू आर द क्विंटेसेंशियल एक्सीडेंटल टीचर. No, it was not like that. हमें अपना जो लास्ट सेमेस्टर ट्रेनिंग का होता है, उसके बाद उसका प्रेजेंटेशन करने जाना होता है, राइट, टू योर जूनियर्स, राइट, जिनको नेक्स्ट सेम में ट्रेनिंग करनी है. राइट. तो जब हमने अपना प्रेजेंटेशन किया, सो देन somehow my HOD came to me and told my parents accompanied me. So they are telling my parents, we have a vacancy, we have invited for this post, and she must apply. She must apply for She a must position apply in for this college. teaching, Right. because she is very good with whatever she explains. Right. So then I was very hesitant because I wanted to continue in HCL. So then my dad said, here if you teach degree, postgrad students, Right. then it will be a very, very nice experience for you. Whenever you want to get into teaching, that will be a very big thing for you. So Right. you must try. So when I sat for the interview and all, then I got selected. And this is the the MCA batch where you were talking about. Yes. You And they gave me the toughest papers. you got the toughest subjects to teach. Toughest. Which had no books. Which had no books. Right. That too MCA final year. So like, what was it like first time teaching students? What did it give you a kind of dopamine, or maybe was it exciting? Did you ever feel ki I will be doing this for the rest of my life? Yeah, maybe this is something interesting that I want to do as a profession. It's very interesting to work with the younger generation, with the upcoming youth of your country, because you can teach them a lot of new things. And I feel somehow I'm responsible for good coding people around in our country, which our country is known for. So you have to find pleasure and ways and means to get that satisfaction from your profession. So when they do projects, whenever they make any kind of software, so that coding in HCL thing, so there I make use of it, and I think somehow we do something wonderful, and then children come out with nice projects, their own projects. I won't say very nice, but then I'll say their own projects, their own work. So when they develop the code in front of me, so it's their baby, they feel that sense of achievement. I feel again like super proud kind of feeling. Yes, children are learning. Right. I think I am a good person to teach. Instead of everything which is available, I am delivering something better. So Right. that's how I thought I should continue. Right. And then being with younger generation, you remain young. इस टाइम पे वैसे आपके और उनके बीच में ज़्यादा फर्क भी नहीं था. Exactly. Like when this is So, an I used to understanding enjoy that you might have developed over the years, Yes. right? But what was it teaching for the first time to a generation which is slightly a year or two younger to you? Right. There was a dearth of good teachers. So it was like, okay, let me try. If I can become a good teacher. And then so much respect you used to get. If you are delivering good, if you are teaching nicely, if you're honest in your work, Right. then I think that's a good thing you can continue. It's a consensual decision कि हम finally will go ahead and try and become a teacher now in school. तो वो क्या कर रहे थे, वो process क्या था, मतलब दिल्ली 1990s में था कैसा teachers के लिए?
Right, from picking a school to study in to finally picking a school to teach in, right, with some sort of teaching background. How did you pick and choose a school if you wanted? I tried many schools. I tried 2-3 schools. I saw the culture there. I saw the crowd and the students' mindset over there. So finally, when I came to St. Francis, I thought, yes, maybe this is a place I can stick to for another 10 years. So there's a lot I can do here because children were very obedient, and whatever I used to say, they used to try, they used to implement. And then next day when you go to class, they used to wait for you that yes, something new is coming up now. We are going to learn. So I think that encouraged me to stay in that school. So from college where you were teaching and there were no books, right, to teaching a much younger audience, did many things change over the few years that it took for you to get to a school? Like, what was the classroom like back then? Like, take us to a classroom in 90, which year would 90, that be? 95. 95? 95 I joined SFS. So what was a classroom like? And also, please, we'd love to hear, what was this cultural difference? Can we call it cultural difference that made you stick to SFS? Yes, SFS was very organized, very sorted kind of school. Children are very disciplined, still very disciplined and very sweet and loving. So they were very receptive of whatever you teach them. So when you have such kind of audience, you should say, whatever you are teaching is reaching across. They were ready to implement, they were ready to try out whatever I say. And then when you are teaching, solving a problem, and you get 3 different answers, 4 different answers, and then we divide the board and write all the 4 parallel answers, and then we kind of debate which one is more efficient, what is like the good in one thing. You can compare, you deal the efficiency part of it along with the children. So that was really good. Right. So that made me stay in SFS. और क्या SFS में मतलब starting years में did you also find other teachers, because you were starting out, but I'm sure there would have been mentors जो maybe थोड़े ज़्यादा साल से पढ़ा रहे होंगे उस टाइम आपसे, तो आपने उनसे कुछ था वहाँ पे सीखने को उस टाइम? Did you seek any guidance? Yes, there used to be a chemistry teacher जो IIT के numerical solve करती थी बच्चों के लिए. तो जब स्टूडेंट्स उनको कहते थे कि हमें ये एंट्रेंस में काम आएगा, मैम ये सॉल्व कर दो, तो मैम उनको सॉल्व करती थी. और ये मेरे लिए काफ़ी मोटिवेटिंग था कि बच्चे उस टीचर के पास जाते हैं जो उन्हें करिकुलम से एक्स्ट्रा भी कुछ दे सकते हैं. राइट. और जिनको वो भी पता है जो बच्चों को नहीं पता. I think we are coming back to the point of gradient, right? The teachers were the main source of information. Yes. आप बता रहे थे कि SFS में you had this opportunity कि एक क्वेश्चन को भी मल्टीपल तरीके से सॉल्व कर पा रहे हैं, उसमें आपको क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन भी मिल रही है. तो अगर आज मैं देखूं कि आज अगर मतलब मैं टीचर बनना चाहता हूँ या कोई और टीचर बनना चाहता है जो देख रहा है, तो आप कैसे रेकमेंड करोगे कि एक बच्चे को उसके डिफरेंट एस्पिरेशन से इंटरेस्ट है अभी आज की डेट में, उसको किस तरीके से इनकॉर्पोरेट करना है कि मेरे पास शायद से 4 की जगह और भी ज़्यादा आंसर्स आए? I think I can tell you in general or about specific to my subject. Sure, we would love specific information. Specifically, if you want to teach computers, then you have to execute the code and show it to them. They'll understand better how to find outputs, how the code is actually executing inside. Right. So there are some apps which really help us. So, but then we need lot of technology into our classroom teaching nowadays. Right. It cannot be only chalk and board and the teacher alone explaining you everything and children are listening to you. It's not that scenario now. Right. So you have to use lots of technology, smart boards, Right. apps. You have to include all these things. Then only children come along with you. They are ready to listen. They are ready to understand. And then they can do better in their studies. जैसे सपोज अगर मैं एक बच्चा हूँ आज क्लास में और मैं पढ़ रहा हूँ कंप्यूटर साइंस आपसे, बट मेरा रियल इंटरेस्ट लेट्स से आई डोंट नो, मेरा रियल इंटरेस्ट IPL में है, राइट? तो मतलब माय एस्पिरेशन इज काइंड ऑफ देन मल्टीलैटरल. आई एम इंटरेस्टेड अबाउट कंप्यूटर साइंस, बट आई आल्सो लाइक सीइंग कि CSK गुजरात टाइटंस को कैसे हरा रही है. तो हाउ मतलब इस सेटिंग में जहाँ इतने इंटरेस्ट है बच्चों के और ऑप्शंस भी जेन्युइनली ज़्यादा हैं, वहाँ कैसे पढ़ा सकते हैं टीचर्स? And how does a teacher keep
up to date? See, a teacher may not know every student's interest, Right. but then if you have a shorter class, less of the strength, then you can talk and you can find out. And then you have to connect their interest with their studies. Like you can ask the child to make a project on iPad. Right. And So he will learn computers in turn. हम कैसे होगा ये इन जनरल अगर हम सोचें या ब्रेनस्टॉर्म करेंगे कंप्यूटर साइंस में, जो मुझे लगता है कि जैसे मुझे ऑप्शंस बहुत फैसिनेट करते हैं, बट आई लव टू नो कि कंप्यूटर साइंस क्या जेन्युइनली लग सकती है ऑप्शंस में, तो उसके अराउंड कुछ हो सकता है. ऑप्शंस के लिए यू मे हैव टू ट्राई आउट कि कैसे होगा. कुछ आप उसको कॉन्सेप्ट्स बताओगे, कुछ इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग दोगे, राइट. तभी उसका इंटरेस्ट और आएगा उसमें, कंप्यूटर साइंस में. राइट. या फिर जो भी मतलब काफ़ी बार दिखता भी है कि शायद से डेटा एनालिसिस कर रहे होते हैं मे बी कई लोग, बट मुझे पूरी तरीके से क्लैरिटी नहीं है कि क्या कंप्यूटर साइंस में ऐसी कोई स्टडीज होंगी जो स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं राइट कंप्यूटर्स के, राइट. जैसे बहुत सारे मॉड्यूल्स भी अवेलेबल हैं. अगर आप उनको यूज करोगे तो फिर आप ये वाली स्टडी भी कर सकते हो. राइट. So, ma'am, you were talking about having a slightly smaller class strength so that the ratio is better in terms of teaching. अभी जो आप teach करते हो उसमें क्या ratio रहता है typically? In computer science we have 25 students. Right, 25 students. One teacher, but then normal the strength of the class is 40 plus. Right. So when you are dealing with say 40 odd people in a classroom, और I'm sure हर बच्चा is commanding attention, तो generally कैसे आप मतलब क्या करते हो क्लास में to be able to make sure कि ये सुन रहे हैं genuinely या कहीं निकल नहीं गए? तो थोड़ा मुश्किल है. आपको लेसन्स को इंटरेस्टिंग ही बनाना पड़ेगा. आपको उनकी डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स पिक करने पड़ेंगे, या आपको उनके साथ ज़्यादा इंटरेक्शंस करनी पड़ेगी उनके लैब पीरियड्स में या कोई और पीरियड्स में, या बुलेटिन बोर्ड डिज़ाइनिंग में, या किसी स्किट में, या किसी स्क्रिप्ट मेकिंग में. When you be with them and when you are going through these procedures, then you can capture what the child is actually thinking, and then I think you can guide them better way. Like, isn't like it asking too much of a teacher to connect with 40 odd students in a class? Yes. Is it even possible? It is possible if you are very dedicated and passionate about your subject and about your teaching. Not everybody can be like this. Right. इसमें पेरेंट्स का कितना बड़ा रोल रहता है आपके हिसाब से टू बी एबल टू सॉर्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट व्हाट यू आर वर्किंग अपॉन एज ऑन अ स्टूडेंट? बहुत ज़्यादा. मैंने ऐसे पेरेंट्स देखे हैं जिनके बच्चे को शायद मेडिकल या नॉन मेडिकल के लिए वो एलिजिबल भी नहीं था, पर उन्होंने इतना अपने बच्चे को पुश किया कि वो बच्चा डॉक्टर है. अब वो कैसा डॉक्टर है हमें नहीं पता, पर वो बच्चा डॉक्टर है और वो पेरेंट्स ने पुश किया. तो मैम इंडिया में मतलब ये प्रॉब्लम है, आई एम श्योर हमारी जनरेशन में भी थी, आई एम श्योर आपकी जनरेशन में भी होगी, कि इंडिया में पेरेंट्स हैव these expectations. Some of them today are like जो मर्जी करना है कर ले, others are very high in terms of expectations. So how do we strike a balance? High and rigid. मुझे लगता है कि अगर मैं सीए बन गई, हाँ. लेकिन मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा कोरियोग्राफी में था, डांस की, Right. तो आई विल नेवर बी एबल टू डू जस्टिस टू माय प्रोफेशन. मेरा इंटरेस्ट हमेशा मुझे कोरियोग्राफी की तरफ ही खींचेगा. फिर मैं शायद इवनिंग में कुछ और एक्स्ट्रा वर्क कर लूँगी. तो जो मैं सीए की मैंने, जैसे मेरे पेरेंट्स कहते थे कि अगर आपने कंटिन्यू नहीं किया, आपने एक सीट स्पॉइल करी. कोई बच्चा जो बहुत ज़्यादा एस्पिरेशन थी उसकी सीए बनने की, एंड देन दैट चाइल्ड कुड हैव डन वंडर्स अगर सीए बन जाता. तो आपने वो चीज़ स्पॉइल कर दी क्योंकि आप बनना चाहते थे कोरियोग्राफर, लेकिन आप बन गए सीए ड्यू टू XYZ एनी रीजन, ड्यू टू प्रेशर्स, व्हाटएवर. तो व्हाट्स द रोल ऑफ अ टीचर? कि आपको, जैसे आपने बोला कि स्कूल में एक बच्चा है, right, and he's facing this pressure from his parents, and as a teacher you are there, you are teaching him or her, and आपको वो दिख रहा है. Then what is your role, and do you try and intervene maybe? Yes. Should a teacher intervene? कंप्यूटर्स में यूजुअली ऐसा होता है, मोर देन हाफ ऑफ द क्लास में बच्चे कंप्यूटर्स लेते हैं और ये बोलते हैं मम्मी ने बोला था, पापा ने बोला था, हमें तो करना ही नहीं है, ये बहुत डिफिकल्ट है, हमें तो करना ही नहीं था ये. तो फिर हमें इंटरवीन करना पड़ता है, हमें पेरेंट्स को भी समझाना पड़ता है कि ये बच्चा का इंटरेस्ट कहीं और है, आप उसको इतना प्रेशर मत करो,
फिर वो कुछ अच्छा सा डिलीवर नहीं कर पाएगा। व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मेंस, आपने कर लिया, आपने कोर्स भी कर लिया, कंप्लीट भी कर लिया, लेकिन जब आपकी टारगेट्स अचीव करने की बात आएगी या प्रोडक्ट्स डिलीवर करने की बात आएगी, जब आप जॉब में होंगे, तो फिर आप बहुत मिजरेबल कंडीशन में होंगे। मैम आप कह रहे थे कि मतलब बच्चा, मतलब यू यूज्ड अ परफेक्ट एलिटरेशन, कंप्यूटर साइंस एंड कोरियोग्राफी, राइट? बट मतलब जस्ट टू सॉर्ट ऑफ स्टेप इनटू अ पेरेंट्स शूज टुडे, अगर मेरा कोई बच्चा हो तो मैं टीचर से थोड़ा ये डेविल्स एडवोकेट कर सकता हूँ कि मैम मैं अपने बच्चों को कंप्यूटर साइंस की जगह कोरियोग्राफी में कैसे डालूं, बिकॉज सोसाइटी एज सच हैज शेप्ड अप दैट इट हैज स्टार्टेड टू रिस्पेक्ट कंप्यूटर साइंटिस्ट मोर देन कोरियोग्राफर्स। एंड स्कूलों में भी ये पैटर्न दिखता है, जैसे कई स्कूल्स में ह्यूमैनिटीज एज अ सब्जेक्ट ही नहीं है या आर्ट्स है ही नहीं। तो जो ये एस्पेक्ट है एजुकेशन सिस्टम का, जहाँ पेरेंट इस बात से वरीड है कि मैं अपने बच्चे को अगर वो करने दूं जो वो करता है, तो would he be able to get the same respect 10 years down the line? I think things are changing, not very rapidly, but things are changing. Parents are respecting their child's interest and all. But then yes, ऐसा भी अभी भी है, बहुत है। मैं इतने बच्चों को जानती हूँ जिनको बनना कुछ और था पर वो बने कुछ और वो अभी भी बहुत परेशान है अपनी लाइफ से। राइट। और मैम जैसे पेरेंट्स के लिए एक और जो डिलेमा मुझे लगता है वो ये कि अगर मेरा बच्चा एक सर्टेन स्कूल में जाता है तो आई हैव दिस प्रेशर फ्रॉम हिज पीयर्स, राइट? एज इन कि मेरा बच्चा इज ही एबल टू सॉर्ट ऑफ गेट द सेम एक्स्ट्रा सॉर्ट ऑफ रिसोर्सेज दैट अदर किड्स ऑफ हिज एज इन द सेम स्कूल आर गेटिंग। तो ये डिस्पैरिटी कितना बड़ा रोल प्ले करती है इन टर्म्स ऑफ मेकिंग श्योर कि कोई आगे निकल गया और कोई पीछे रह रहा है? ये तो बहुत मैटर करता ही है। पेरेंट्स को हमेशा रहता है कि मेरा भी जो बच्चा है वो आगे ही निकले, उसके पास किसी भी टाइप के रिसोर्स की कमी ना। अच्छा, बहुत कंपटीशन है और कॉम्पिटेंट है पेरेंट्स भी बहुत। बट क्या इज जीडीपी पर कैपिटा रिलेटेड टू सॉर्ट ऑफ मार्क्स पर कैपिटा या सक्सेस पर कैपिटा? यानी क्या क्लास में ऐसा हो रहा है कि कोई हम्बल बैकग्राउंड से है तो उसके चांसेस ट्रूली आउटशाइन करने के दूसरों को कम है बिकॉज मे बी वो सेम कोचिंग नहीं जा पा रहा कंप्यूटर साइंस के लिए, या उसके पास उतना अच्छा कंप्यूटर ही नहीं है तो एंड्रॉइड की एप्लीकेशन से नहीं बना सकता जो बाकी बना सकते हैं? कोविड में मैंने बहुत देखा ये चीज़, जिनके पास सिस्टम नहीं था उन बच्चों ने प्रोजेक्ट्स बनाए और एंड्रॉयड के अपने मोबाइल्स पे बनाए, राइट? तो आई रियली अप्रिशिएट देयर विलिंगनेस टू डू द प्रोजेक्ट। दे फाइंड रिसोर्सेज, दे फाइंड मीन्स टू डू इट। चाहे नहीं था सिस्टम पर उन्होंने कैसे भी करके किया, और उस केस में हम बहुत सपोर्ट करते हैं उस बच्चे को कि उसने किया, कम रिसोर्सेज होके भी किया, पर वो उसको कितना आगे तक ले जाएगा एज कम्पेयर टू अदर चिल्ड्रन, वो इतना अभी उसमें क्लैरिटी नहीं है। अभी मैम आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली अबाउट कोविड टाइम्स, राइट? इट वाज एन अनपैरेलल्ड टाइम एंड स्कूल्स आई थिंक टुक द बिगेस्ट हिट, राइट? क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी कह सकते हैं या अडेप्टेशन में स्पीड की कमी कैसे बोल सकते हैं। तो लाइक हाउ डिड यू गाइज मैनेज? क्या आपने चेंज देखा बिफोर प्री कोविड टाइम्स एंड आफ्टर कोविड? एवरीबडी बिकेम टेक savvy, चाहे वो हिंदी की टीचर थी, चाहे वो बच्चे थे, और सब ने इन रिसोर्सेज को एक्सेप्ट करना शुरू करा। यस, ये भी कुछ है जो वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। नहीं तो आई थिंक ये इंडिया में कम था और अब्रॉड बहुत ज़्यादा पहले भी था। हम ये बोलते हैं कि बच्चा बाहर क्यों पढ़ने जा रहा है, क्योंकि शायद वो प्रोफेसर पढ़ा रहा है जिसकी हम इंडिया में बुक पढ़ते हैं, राइट? और वहाँ पे वो प्रोफेसर इज एक्चुअली टीचिंग यू लाइफ। शायद इसलिए हम अपने बच्चे को बाहर पढ़ने के लिए भेज देते हैं। तो ये चीज़ अगर किसी भी तरीके से हमें उसके ट्यूटोरियल्स मिलते हैं, अगर हमें उस प्रोफेसर्स के लेक्चर्स मिलते हैं, बहुत सारी साइट्स हैं उस पर IIT के प्रोफेसर्स के लेक्चर्स आजकल मिलते हैं, तो आई थिंक चिल्ड्रन आर वेरी लकी एट दिस एज to get hands on all these kinds of opportunities. तो मे बी लाइक जैसे उत्कर्ष वाज सेइंग कि जो डिस्पैरिटी है ड्यू टू पर कैपिटा इनकम, वो ब्रिज होता जा रहा है क्या थ्रू टेक्नोलॉजी? दैट्स अ गुड थिंग। पर कैपिटा इनकम पर बहुत सारे रिसोर्सेज फ्री भी तो हैं, राइट? तो जो करना चाहते हैं वो करते भी हैं। हाँ एग्जैक्टली, बट ये हाँ थोड़ा डिफरेंस तो हमेशा रहेगा। स्कूल में मैम आपको क्या लगता है कि अलाउ इज हैंडिंग लैपटॉप्स टू स्टूडेंट्स इन स्कूल्स अ गुड आइडिया? आप लैपटॉप्स के बिना आजकल कुछ भी नहीं कर सकते, राइट? गॉन आर द डेज ऑफ पेन एंड पेपर, राइट, स्पेशली इन योर सब्जेक्ट।
especially in my subject. I would love to teach on smartboard rather than on a simple chalk and Right. board. And you'd also love students to have devices on them while you teach? I have started teaching in lab where I have a big screen. Yeah. I type my code, they try at the same time, and then they make changes. So like now we are teaching live coding and they are executing that code at the same time. So children have started asking me, ma'am, please kindly teach us in lab so that we can execute the code at the same time. Right. Also good for you कि in terms of I think better तरीके से आप उनके projects भी assemble करवा सकते हो. हाँ. Right. Everyone can possibly submit their code on GitHub and then you can check from there. Yes. मैम in terms of projects जो मुझे याद है जब मैं स्कूल में था थोड़ा सैड है बट मेरे को लार्जली ये याद है कि प्रोजेक्ट्स में उस टाइम ही ऐसा नहीं था कि people used to invest a lot of time in those. So in grade 11, grade 12 projects, the vibe that I remember was a lot of people were taking too much inspiration from the outside. Right. मतलब थोड़ा और शब्दों में कहूँ तो मतलब ये था कि मैंने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया अपने उसमें. तो अभी जो प्रोजेक्ट्स हैं मुझे लगता है अगर मुझे रेलवे टिकटिंग सिस्टम बोलेगा कोई तो मैंने इंटरनेट से ही उठाना है. राइट. अगर मुझे कुछ ऐसा नॉवल चीज़ बोली जाएगी करने में शायद से तभी मैं जाके एफर्ट करूंगा कि ये चीज़ है ही नहीं इंटरनेट पे तो कैसे बनाऊं. तो प्रोजेक्ट्स कैसे इवॉल्व करने चाहिए कंप्यूटर साइंस में? जो चीज़ नहीं एग्जिस्ट करती वही ट्राई करना चाहिए. राइट. मतलब एट टाइम्स हमें बच्चों को बोलना पड़ता है कि ये वाले प्रोजेक्ट्स नहीं करने हैं. कि रेलवे टिकटिंग सिस्टम कोई नहीं बनाएगा. नहीं करना है. कुछ थिंक ऑफ समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स और समथिंग लाइक दैट. राइट. एंड उनको उस प्रोजेक्ट में सपोर्ट करने के लिए आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं? नेट. राइट. द इंटरनेट. सो अगेन लाइक इंटरनेट जैसे आप कह रहे थे एप्स राइट. सो स्मार्ट बोर्ड के बिना तो आई थिंक ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है. इफ for being a good teacher you need resources, digital resources. So I think infrastructure has become a crucial need in every classroom. Yes, definitely. That's the first thing every good school is now looking up to. Right. तो मैम अब आपने बोला है आई एम श्योर हमने आपको कुछ नहीं किया बोलने के लिए कि प्रोजेक्ट्स ऐसे ही होने चाहिए जो मतलब ना हो इंटरनेट पर बट उनको टैकल करने के लिए उन्हें लाइफ पे लाने के लिए इंटरनेट यूज कर सकते हो आप. वेब यूज करना पड़ेगा. वेब यूज करना ही पड़ेगा. इनएविटेबल है. हर बच्चा गूगल करेगा इस पे क्या अवेलेबल है और ये कैसे बनेगा आइडियाज लेगा. इनफैक्ट वो प्रोजेक्ट के आइडियाज के लिए भी गूगल करेंगे. आइडियाज के लिए भी गूगल करेंगे. बहुत कम कोई सोचेगा कि मुझे ये प्रोजेक्ट आ रहा है दिमाग में मुझे ये करना चाहिए. शायद 100 में से एक. उसके बाद बच्चा बैठ के गूगल ही करेगा कि मुझे क्या टॉपिक्स लेने चाहिए. राइट. तो मैम उसमें जो हमने देखा है बोथ इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड इन टीचिंग दिस इज वन ऑफ द कोर क्वेश्चंस जो हम जेन्युइनली पूछना चाहते हैं कि गूगल इज वन पार्ट ऑफ द गेम. इट हेल्प्स यू एज सर्च बट नाउ द वे जिस तरीके से हमें लगता है द फ्यूचर विल गो एंड जैसे ऑलरेडी जा भी रहे लॉट ऑफ स्टूडेंट्स विल टर्न टू एआई टू बी एबल टू हेल्प देम टू कोड आल्सो गेट आइडियाज. राइट. तो आप उसको कैसे देखते हो? Do you see it in the same realm कि हाँ अगर आपको सर्च करना है आइडियाज के लिए I don't care if you get it from Google, I don't care if you get it from AI as long as they are of value. या फिर और कैसे देखते हो आपने? I think Google is very vague. AI is better. Right. And then it can be trained according to your need. It can be molded. Right. To help you in a certain way. Right. So it serves a more specialized purpose which is better for the students. Yes, definitely. Right. And like how can the journey of a student be transformed, right? Like from learning things like bubble sort to making projects and ideas, taking ideas from an AI. How has that journey transformed as a teacher and how can it actually affect a student? How can the students actually utilize? First, let's talk about the teachers, right? How can the teachers use something like this? Should they? They should. You cannot keep children away from technology. Neither teachers should hesitate to use technology because they are dealing with children. Right. And children are very fast in learning any new thing, any upcoming thing. True. So if you are dealing with children, then first the teacher has to learn how it should be. Like almost everybody in our country also, whenever they talk about education, they say students stop learning when a teacher stops learning. Right. So if a teacher has to grow, it's not because he has been using the same 20-year-old notes. The books are not changing.
chapters are same, you remember the page number, you remember the exercise or the question number. It's not that way. Especially in computers, the moment the syllabus comes on your tips, it changes. Because we have to be like updated. Right. And the CBSE does this very fast. So similarly, even the teachers, they have to be like very fast with whatever they want to learn. They should learn. They should try out new methods. And then I think AI gives you a specific ocean of things you want to see. मतलब essentially अगर किसी टीचर को कल कोई लेसन प्लान बनाना है या फिर अगर किसी टीचर को कोई ट्रिकी कॉन्सेप्ट समझाना है, could be the IPL meets computer science thing, then you're genuinely recommending कि they do try out AI because students would eventually do it as well, right? We should expose them to new things, Right. and then leave it to kids कि आप कैसे उसको करते हो. Right. A And train teacher's them, job is to expose them to new technology. Right. अगर मुझे entrepreneurship के बारे में बहुत ज़्यादा पता है, Right. तो मुझे IPL भी इतना ज़्यादा पता होगा ज़रूरी नहीं है. Correct. या मुझे कोडिंग भी उतनी अच्छी आती होगी, ये ज़रूरी नहीं है. Right. तो हर बच्चे का एक डायमेंशन अलग होता है. तो Right. बाकी डायमेंशंस पूरा करके उसको स्टार कैसे बनाएं, उसके लिए उसको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें तो यूज़ करनी पड़ेगी ना, जो उसको हेल्प करेगा. Right. एक टीचर कहीं थोड़ा हेल्प कर सकता है, दूसरा टेक्नोलॉजी हेल्प कर सकती है, तीसरा उसकी जो अपनी जो एक कंसिस्टेंसी है, उसकी एक जो विलिंगनेस है मेहनत करने की, वो हेल्प कर सकती है. पेरेंट्स गाइड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी घूम फिर के सब कुछ फिर टेक्नोलॉजी पे आता है. परफेक्ट. तो एक छोटा सा जो हमने सोचा था करेंगे कि फन एक्टिविटी नॉट टू स्ट्रेसफुल एट ऑल, कि सो we've obviously got our own AI जो हम जिसे one of India's first AI teachers बुलाते हैं. उसका नाम है डार्विस. और डार्विस essentially अगेन एक ऐसा मशीन लर्निंग मॉडल है जो सारे सब्जेक्ट सारे ग्रेड के पढ़ा सकता है. और हमने डिफरेंट स्कूल्स में से ट्राई आउट भी किया है. तो एक हम चीज़ करना चाहते थे कि लेट्स से कॉन्सेप्ट है, कंप्यूटर साइंस में काफ़ी कूल कॉन्सेप्ट है कॉल्ड डिक्शनरीज, राइट? तो लेट्स से इफ आई वाज अ स्टूडेंट एंड आई नीड टू अंडरस्टैंड कि डिक्शनरीज क्या होते हैं, तो आप मुझे ये बता सकते हो कि डिक्शनरीज, हाउ वुड यू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिक्शनरीज टू अ 10-year-old who's kind of interested in say cricket or IPL, or just basically a 10-year-old जिसको कुछ नहीं पता, उसके अपने इंटरेस्ट है. And he or she does not have any background, has no background about dictionary, the concept. उसे कंप्यूटर साइंस के बारे में कुछ नहीं पता है essentially. If the age is 10 years, you would say, so I would ask him, how would you search for any chapter in your book? Okay. So he'll open the index. Yeah. He'll say this is the page number, and you are onto that chapter. Right. Once you reach the chapter, you have the entire knowledge about that chapter. Correct. So that means there is some key which is related to the rest of the chapter. Right. So then I'll teach him. Similarly, we can assign keys, and then you can have the rest of the things in one thing, so which is a paired thing. Right. Then this collection book can be Right. called a dictionary. Could be called dictionary. Right. So there are key Something values. like this, because his age is very less. You're generating a need. You're basically connecting it with something a 10-year-old has already experienced, right? And then teaching it. Right. Because I think this is what AI does. Absolutely. Like, I remember once a teacher, when the AI was introduced in the schools, that teacher calls me up. Sapna, tell me one thing. AI बच्चों को कैसे बताओगे? 6th या 7th के बच्चों को कैसे इंट्रोड्यूस करोगे? मुझे समझ नहीं आ रहा. And she was about to write a book on AI. तो मैंने इतना कुछ सोचा नहीं था उसके बारे में, बट मैंने उसको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दिया. अगर कोई 3 या 4 years का बच्चा है, बाहर निकल रहा है एंड इट्स अबाउट टू रेन, तो पेरेंट क्या बोलेगा? उसकी मदर डेफिनेटली बोलेगी बेटे अम्ब्रेला ले ले, इट्स अबाउट टू रेन. तो जब वो नेक्स्ट टाइम जाएगा, वो देखेगा बाहर क्लाउडी है, तो वो उस पास्ट इंसिडेंट से रिलेट करेगा और बोलेगा शुड आई कैरी अम्ब्रेला मम्मा, इट्स गोइंग टू रेन. तो दिस इज व्हाट एआई इज. तो आप इस एग्जाम्पल को देके आप स्टार्ट कर सकते हो और उसके बाद अपना चैप्टर लिख सकते हो. देन शी वाज सो अम्यूज्ड कि अरे हाँ, दिस इज अ डेली लाइफ का एग्जाम्पल जो कि शायद बहुत अच्छा एग्जाम्पल है टू बिगिन द चैप्टर. And that's exactly what we try to do in our workshops, right? Right. What we do is we take topics from students
that they don't necessarily like, and we try to correlate them, ground them in real life examples, stories, and even fictional stories of Iron Man, Harry Potter, whatever they love. And we have this is one of my favorite statements that I love to do with Darwiz, one of my favorite activities, that I take very difficult core concepts, boring concepts otherwise, and I asked Darwiz to explain that concept to me like I'm a 10-year-old using real life examples, right? And you would be amazed, like the story that you just came up with, like you had the experience to actually come up with a story. But sometimes, maybe like a friend, a teacher might fall short of these kind of examples. And we really think that's the real human limitation, right? The recall value of our brain. And we are absolutely sure that to bridge that gap of what a teacher wants to do and what she or he is doing, that can be bridged through AI, right? Yes. And that is why AI should be the future of education. AI is the future. There's a lot happening. I know some people who are working with CBSE because CBSE wants to promote AI. There's so much happening on the platform of AI that I think there's little less clarity on this, because when I saw the curriculum, it was more of the activities only. The syllabus is not very well designed. Right. I don't know, maybe I'm not teaching that paper, so I have not gone through that limit. But then I think there is a lot to be done. There's scope for improvement, But essentially. yes, So this is the talk of the town. AI is the adaptation is sort of slow right now. slow right now because it is like people are not knowing how to make it a good tool to their use. So they have acknowledged it, They have. I think they should. and the fear around AI. Have you ever experienced those kind of questions? Like if being a teacher who is current, right, who wants to tell her students about the new technologies, and have you ever faced any backlash, or not just backlash, any resistance when it comes to the topic of AI? Then you should ask some Hindi or social studies teacher, not the computer teacher. Right. How can the computer science teacher get a backlash? She should be prepared. She should promote such. Right. मैम एक्चुअली सेम जो क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था वो हमने आने से पहले डार्विस से भी पूछा था. A computer teacher should clear all such doubts. राइट. Absolutely. तो एक्चुअली प्रणव इस चीज़ पे हिंट कर रहा था कि बैकलैश हमें कभी कभार महसूस हुआ है फ्रॉम स्पेसेस वेयर टीचर्स आर काइंड ऑफ फीलिंग कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि देयर इज टू मच टू ओवरवेलम अ किड विद. बट वी फील द अदर वे अराउंड. जैसे हमने आने से पहले डार्विस से एक बार पूछा था, वी आस्क्ड हिम, कुड यू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिक्शनरीज टू अ 10-year-old, समवन हू लव्स प्लेइंग द IPL or watching the IPL. So he told us something of the tune कि you can ask the 10-year-old to imagine an IPL match where he wants to keep track of the scores of each player. So he could design a dictionary जहाँ पे there are two things. There are keys and values. Keys could be names of the players. So there's a Virat Kohli, a KL Rahul and an AB de Villiers, and their scores would be the values. So if ever you need to retrieve a player's Top score. essentially you are giving his name as a key to get back the value. मतलब मैं काफ़ी अमेज था इस चीज़ से बिकॉज मुझे लग रहा था कि the ability to be able to relate to concepts and what we can do as humanity when we take our experienced teachers and equip them with examples like these, and they could build upon it to sort of reach another scale. Right. Right. Then it adds to your collection of examples, and you can reach out to more children. Right. Right. Otherwise, you are giving 2 or 3 examples. Right. If you are connecting to maybe 10 out of 40 in a class. So Right. if you are diverse examples you are using, then maybe 30 out of 40 you are reaching up to them. Also, say this year you'll be teaching grade 11, or you are teaching grade 11. These are kids these are 16-year-olds. So they're born in 2007 essentially, which makes them about the same age as an iPhone. Right. The fact that iPhone was developed in 2007. तो अब ऐसे बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए eventually यार, जिनको जो पैदा ही iPhone के बाद हुए हैं. And when they have options like they want to become streamers, right? On Gamers. YouTube, gamers who stream their gaming online. They want to be vloggers. And these are very valid career choices, right? They give you real money. And because I remember a time where I used to be only scolded for playing games.
It could not have been an excuse कि मेरे को इसमें career बनाना है. But now that has become a reality. Right. And any kid with, let's say, 10,000 followers on YouTube can earn real cash. That's right. Right? So to cater to this audience and still bring them back, gauge their interest to a classroom, right? How do you guys still manage to do it? And has that become more difficult? Before I answer this, to my surprise, in the PTM, one parent told me, I want my child to become influencer. So I was surprised, and I really appreciate the honesty of the parent. Right. They are thinking in such terms. But otherwise, as most of the teachers and the parents say game खेल रहा है तो बिगड़ गया, ऐसा कुछ नहीं हो सकता. True. You know, that kind of things we tell them. मैम हमारे साथ हुआ है 2 दिन पहले. We were talking to a child from GHPS India Gate. This child is 11 years. And her mother was asking us, how can Darwiz help my kid scale up from 2,000 followers to 20,000 followers on YouTube? And he has only 90 watch hours. Can you guys help him to scale up to 4,000 so that he can actually get revenue in? So every child is having his own channel. Right. If he knows how to play guitar a little bit, Yeah. he has his own channel. Right. और भी कुछ नहीं है तो पेरेंट्स रिकॉर्ड करके चैनल बना के वीडियोस डाल रहे हैं. True. खुद ही डाल रहे हैं. Correct. उसके बाद वो बच्चे को they are scolding the child कि तुमने क्यों इन्फ्लुएंसर बनना है. Right. So I think our generation is a little bit in dilemma, or we are not clear Right. कि हमें actually करना क्या है. But children are clear, or they should be guided properly, I feel. Right. अगर आपको एक parting thought देना हो to both teachers as well as parents and students about how they should approach AI in terms of genuinely incorporating it in their lives for the positive. So what would be that one message? I would say it is much, much better than Google. You all are using Google, but then you have to now move from Google to AI. Right. This is the next thing which you have to explore, experience, and then understand. So before you tell them this is not the right thing, or you become insecure about it, you need to explore. Right. True. And that's what we tell when we are talking to parents. Like, we really feel it's not a matter of if, it's a matter of when. Right? You need to accept AI as the next big thing, and you need to start using it for any purpose that you actually have, school related or otherwise. You please ask them one question. They all want their children to settle into artificial intelligence, machine learning. But then they don't want their children to use AI. How controversial is this? How contradictory is this? Ironical to the next level. Irony, no? Yeah. They want their child to grow in that career. That should be the career choice. But then they don't want to use AI because they have not experienced it. They don't know how it is to be used properly. I think it's like when computers were coming in our country, most of the people were insecure. हमारी jobs चली जाएंगी, computers हमारी job ले लेगा और हम खाली हो जाएंगे, हम unemployed हो जाएंगे. लेकिन उसने job का scenario change किया. Overall GDP भी expand कर दी. करी. Right. तो ये वैसा ही phase है. एक बार हमने भी already been thrown under the bus of the last industrial revolution, which gave us a good 40 years of real poverty. So I think if we could catch on and latch on to this one, AI, so we could, as India, we could leapfrog from, I don't know, $3.5 trillion as an economy to possibly a $7 or $8 trillion economy in the next 6 to 7 years. आप अपने बच्चे को 4 न्यू बुक्स लेके दोगे, वो आपको 10 बुक्स दे देगा एक ही बार में. AI True. Correct. तो आप वही देना चाहते हो ना, उसको उसी के लिए यूज करने दो. Baki, you put filters or you do whatever, but then use it as a tool. Right. Instead of you becoming a slave again. Right. Right from the childhood, children are debating on technology is a boon or bane. Right. So this is the time, no? We have been always convincing it. Right. You train technology for your use. Right. Right. और tuition भी मतलब hopefully tutors are great, but we want कि तेरा यहाँ पे कोई I don't know 7 से 8 करोड़ बच्चे शायद से ट्यूशन जाते हैं इस कंट्री में, वो किसी तरीके से कम हो जाए, राइट? और everyone actually gets a personal tutor instead. I'm really against tuitions. मेरे बच्चे गए हैं या मैं गई हूँ, irrespective of that fact,
मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, अगर मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ तो मेरे बच्चे को ट्यूशन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, राइट पहली चीज़। और अगर मैं उसी बच्चे को ट्यूशन में पढ़ा रही हूँ तो देन ये तो बहुत इनसेन है। वो सेल्फ स्टडी थोड़ी और इम्प्रूव होनी And चाहिए, because of that, I feel encourage बच्चों होनी का चाहिए। जो 24 hours हैं, they have been literally juiced out because of things that they have to do, but not necessarily need to do. Right? वो पहले स्कूल जाते हैं, स्कूल से आके they go to a tuition, and उसके बाद उनके पास टाइम ही नहीं बचता है। उनके पास सेल्फ स्टडी का टाइम ही नहीं बचता है, Right? क्योंकि वही चाहिए। Absolutely. उनको सेल्फ स्टडी ही करना है, जो क्लास में पढ़ा उसको आके सेल्फ The स्टडी biggest करना है। problem the parents that we talk to tell us, इसकी बच्चे का टाइम ही नहीं है। टाइम कैसे बचेगा? बंद गया, हर जगह कट्टे बंधे हुए हैं पहले मुझसे से। पेरेंट पूछता है कि मैम कंप्यूटर्स की भी ट्यूशन लगा दें। मैंने बोला आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, टाइम है बच्चे के पास, ज़्यादा टाइम है। मैं तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी ट्यूशन कल्चर इज रियली स्पॉइलिंग आवर एंटायर। वही सेम एक्सरसाइज, वही टीचर उसको पढ़ा देगा और इंटरेक्टिव भी नहीं होता इतना जितना होना चाहिए आइडियली। बिकॉज ट्यूशन की क्लास भी तो 50 की हो गई है। करेक्ट माइक लेके पढ़ा रहे। हाँ करेक्ट, कई बार रिकॉर्ड करके भी पढ़ा रहे। हाँ राइट, I think we have a very interesting session lined up for you now. We have a small rapid fire, and there are a few questions that we love to ask you, ओके right? And as the name suggests, we love it to be rapid. Okay. with some fire। ओके वो वैसे बड़ा हार्मलेस है, बहुत ही बेसिक है, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है। मतलब Start. एक था कि कैरी ऑन। अगर आप ये सब्जेक्ट छोड़ दो और कोई और सब्जेक्ट पढ़ाने लगो, तो क्या आपको लगेगा कंप्यूटर साइंस तो मेरा दिमाग खा गया, कुछ और कर, अगर मुझे कोई और सब्जेक्ट पढ़ाना हो, व्हाट वुड दैट सब्जेक्ट बी? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी, राइट। और एक दूसरा क्वेश्चन था कि क्या आपने कभी किसी बच्चे को चीटिंग करते हुए पकड़ा है स्कूल में और आपको ये लगा है कि नहीं मैं छोड़ देती हूँ, आई शुड टर्न अवे माय आई, कि कर रहा है अभी मैं क्या करूँ इसका? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है? एनीवन हुज कम अंडर योर रडार हैज गॉन फॉर अ टॉस? चीटिंग इज बैड, इट शुड बी स्टॉप्ड, और कितना, इट शुड नॉट बी डन। काफी बच्चों को देखा है आपने करते हुए, कोविड के बाद भी या कोविड के दौरान भी? कोविड के दौरान तो बहुत चीटिंग हुई है। हम किसी के मार्क्स पे रिलाई नहीं करते, हम यही बोलते हैं ये कोविड के टाइम में किया इसने तो ये तो बहुत इजी था करना। What is one trick that you have as a teacher, hack that you rely on? For teaching या computers, I give them daily life examples. I execute the code and show them. So I think that's when you relate it to their daily life, they understand it better. राइट। And then we have like sites like you expose them to Stack Overflow, you tell them Python tutorial dot visualization thing. Yeah. So then they get more interested into the subject. They try to execute and they try to see कि अच्छा मुझे पता लग रहा है अंदर क्या हो रहा है. So then I think they become gradually they become the computer person. Right. Also tell us your favorite teaching memory. कोई एक चीज़ आपको genuinely बहुत याद हो, पसंद दिल में, मतलब बिल्कुल registered हो? एक स्टूडेंट था, उसको लगता था कि शायद उसको क्लास में अटेंशन कम मिलती है as compared to there was one more favoritism. So Right. I think I am not very partial. I'm not partial. I try to be, but then I think that was my initial years. तो आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे जज किया जाता है इनिशियल ईयर्स में, जब तक आप वो बॉन्ड क्रिएट नहीं करते हो। तो इन दो बच्चों में काफ़ी कंपटीशन था, तो उसको लगता था कि नहीं मैम दूसरे बच्चे को ज़्यादा अटेंशन देती हैं। सो देन आई टुक हिम फॉर एन इंटर स्कूल इवेंट। हमने एक अच्छा सा एडिटर डेवलप किया, यूज्ड टू कम होम, यूज्ड टू कोड टुगेदर, आई यूज्ड टू हेल्प हिम, एंड देन स्प्रिंगडेल्स पूसा रोड में इन दोज डेज he got the best software prize. Right, and this was in which year was this? This was in 97, I think. Wow. So there's one student, he is about to choose his stream. It's either commerce or computers. You are the deciding factor. What is one thing that you will tell him to pick computers? Time computers का ही है, और कुछ नहीं लेना. Right. No other stream, that no easy. other stream. No. It's easy. Alright. There's nothing to be Doubtful thinking about or getting confused about it. Computers में
Indians have reached a point where the world has started acknowledging them. I think our children are naturally good with computers because they know कि अगर हमें करना है तो यही कोर्स करना है. They are not like students abroad जो 2 महीने बाद सोचते हैं नहीं this is not my cup of tea, I should change my course. Right. I remember as a parent I was filling forms for my own children. Yeah. And then there is my roommate who is in Toronto. So then we both as mothers we were discussing. So then she said यार मुझे इंडियन बच्चों से बहुत डर लगता है. तुम्हें क्यों डर लगता है? तुम रेजिडेंट हो वहाँ के तो तुम्हें तो अच्छे से एडमिशन मिलेगा. खेती लेकिन इंडियन बच्चा सोच के आता है कि मुझे कुछ बन के जाना है और ये 2 years में कोर्स खत्म करना है और कुछ बन जाना है. Right. लेकिन वहाँ के बच्चों को ऐसा कुछ थॉट प्रोसेस ही नहीं है. Right. वो सोचते हैं 2 महीने हो गए मुझे नहीं समझ में आ रहा, चेंज कर दो. उसके बाद नेक्स्ट कोर्स में गए वो भी समझ नहीं आ रहा, वो भी चेंज कर दो. इस चीज में वो 2 साल निकाल देंगे. लेकिन इंडिया का जो बच्चा है वो सोच के आता है मुझे कोर्स करना है और मुझे कुछ करके दिखाना. सो वो उस चीज से इंडियन स्टूडेंट्स से वो डरते हैं. एक लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल, what is that one misconception that you think right now people in India have about AI, specifically in education, which should go? I have not come across any misconception as such. मेरे को जो ये लगता है कि लोगों को पता ही नहीं है AI है क्या. Right. It's the less knowledge and less awareness. Right. So the fear comes from the lack of knowledge. Yes. Or the misconceptions from the lack of knowledge. They don't know what is AI. So ma'am, finally we'll just love to have any final message that you have for the teachers, for the students, or maybe the parents that are coming up in this new day and age. They are trying to make it big. So what is your note to those students? I would say never get away from any upcoming thing, any new thing which is coming up, and do not become a slave of it. Make it your slave. Make Use work it. for you. Use it to your benefit maximum. You have to develop that skill. Instead of getting trapped into anything, you make use of it maximum. Lovely. Thank you. Thank you for your time. Genuinely. Thank you. My pleasure. Thank you. Thank you so much, ma'am. It has been a very informative session, and we really hope that, and we are sure that our viewers will think of it in the same way. Thank you. Thank you so much for your time. Thank you. Thank Zara you. Limani hai aapka. Thank you.